Hello everyone. So in this video we are going to discuss Aristotle fallacy and Galileo's experiment. In the last video, balanced forces and unbalanced forces has been completed because that forces were important to complete the upcoming topics. Okay. So we'll start with Aristotle fallacy. Okay. So Aristotle fallacy. So what was Aristotle fallacy? So first I will tell you about what is fallacy. You know Aristotle? Aristotle is one of the great, philosophers of his time. Do you know that Aristotle he was almost genius in all the subject, because as you will come to list his, you know, the contribution of Aristotle. You will find it in your social studies also, you will find it in science also, and somewhat also you will find it in your mathematics also. So he was a big philosopher, he was a mighty philosopher of his time. So what actually he said, that rest, he said that rest is the natural state of any body. So this is what Aristotle said. He said that rest is the natural state of any body. To keep it in motion, an external or unbalanced force is required to keep it in motion. Okay, so this is what he said. He said that rest is a natural state of body. To keep it in motion, an external or unbalanced force is required to keep it in motion. Okay, so what actually he wants to say? He wants to say, let us just demonstrate a thing. Now, yes, I have this duster. Now this duster is initially at rest. Now if I push this away from here, okay, now I'll just take, yes, just see this pen. Now this pen is in motion, is at rest. Now when I'll throw this pen, will I require any external force to make it move? No. If I am rolling it on my palm, if it it is not rollable. Okay, so let us do this experiment. So for example, if I have pushed this away, do I need any external force? No. If that is moving, that will keep moving. This is what Galileo actually conducted. An experiment the same way that I showed you here. He took two inclined planes, okay, and then after he conducted the experiment, and then after he concluded that Aristotle was actually wrong. So Aristotle, actually after that, when Aristotle was the philosopher, he was one of the respected personality of that era, and nobody ever questioned his legitimacy. ठीक है, जब एरिस्टोटल जिस समय के फिलोसोफर है, उस समय में लोगों का इन पर काफी ज्यादा भरोसा था, क्योंकि आज जो हमारा भरोसा जैसे स्टीफन हॉकिंस हो गए, आइंस्टाइन हो गए, उन पे है, उस तरीके से उस तरह लोगों का भरोसा एरिस्टोटल पे था. एरिस्टोटल वन ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर ऑफ दैट टाइम. जब इन्होंने अगर ये बात बोली है तो पक्का कहीं ना कहीं सही हुआ, ऐसा लोगों को लगा. And almost a millions of years means a span of thousands of years, people thought that the rest is the natural state of the body, and for keeping it in motion we required an external, or say an unbalanced force. Okay, so as I told you in the last video, that whenever you roll a ball on the ground, you want to roll this ball on the ground, this will keep moving. Remember, we are neglecting the friction. As I told you, यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं. वी आर नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन. ओके, अगर बॉल को हमने रोल किया,
और फ्रिक्शन नहीं है, ये तो चलता चला जाएगा. We don't need any external force to keep it in motion. It is going in motion. So that is what Aristotle became wrong. That is why this is called fallacy. Fallacy मतलब गलत धारणा. That is the exact Hindi of that. धारणा, गलत धारणा या फिर wrong assumption or wrong thinking. This is what fallacy is all about. Okay. Now let's come to our book. Okay, the topic which is given in our book, which is Galileo experiment, and that is important to understand. Okay, so we'll discuss here Galileo's experiment. Galileo's experiment. Another one of the greatest scientists of science, Galileo. Galileo Galilei. He was an Italian scientist. After 1900 years after Aristotle was proved wrong by Galileo. What did Galileo do? What did Galileo did? What Galileo did that proved Aristotle wrong? So he conducted an experiment, and that experiment is called inclined plane experiment. Inclined plane experiment. Okay. So what he did? He took an inclined plane like this, and another like this. So this was an inclination. This was also an inclination. All they were greater than 90 degree. इसको उन्होंने greater than 90 degree रखा था, ठीक है, और इसको भी रखा था. और जो ये वाला रे है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं इसको अगर ऐसे मार्क कर दूं A B C D, ऐसे उन्होंने मार्क नहीं किया, बट आई एम जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड. सो वो क्या किए, उन्होंने वो CD जो लाइन है इसको ये धीरे धीरे कम करते गए. फॉर एग्जाम्पल if this is there and I need another thing. If I don't have, let us see like this. So it was like this. If this is, and it was like this here. So as you can see, this is greater than 90 degree. This was also greater than 90 degree. So this was the curve, and here also this was the curve. Okay. So this was what he wanted to. He was changing this एंगल, ये BCD एंगल को वो चेंज कर रहे थे रेगुलरली. तो अभी उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, यहां से इस दोनों को बराबर रखा, इन दोनों के इंक्लाइनेशन को बराबर रखा. दैट इज द एंगल दिस थीटा एंड दिस वाज आल्सो थीटा, मींस एंगल दोनों को सेम रखा गया. और ये था A हमारा. इस पॉइंट से उन्होंने एक बॉल को ड्रॉप किया. उस बॉल को ड्रॉप करने के बाद बॉल यहां पर आया. यहां पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी. ये ऊपर चला, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम हुई और वो यहां तक पहुंच गया. सो इफ यू कनेक्ट द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट विल कनेक्ट टू पॉइंट्स ऑफ द बॉल. ये वाला बॉल यहां तक पहुंचा, सेम हाइट तक गया. फिर क्या हुआ, उन्होंने इस बार क्या किया, इस बार BCD जो एंगल था उसको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया, इस बार बढ़ा दिया. अभी क्या हुआ कि बॉल को यहां से उन्होंने फिर छोड़ा, ठीक है, और ये ऐसे था, इसको थोड़ा और ऊपर ले गए वो. अब फिर जाकर के बॉल यहां पर आ गया. यहां पे फिर से उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर भी कम होते गई और यहां पर जाकर के इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई. ठीक है. तो अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें हम लोग, तो ग्राफ से अच्छे से समझ में आएगा. तो अगर इस तरीके से गया, समझो ये इसका वेलोसिटी ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी. तो इसका वेलोसिटी ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, और एक बार ऐसे इंक्रीज हुआ, फिर ये ऐसे एक बार नीचे चला गया. इस तरीके से इसका भी ग्राफ ऐसे ही बन गया. ठीक है. ये तो हाइपोथेटिकल ग्राफ मैंने बताया, हालांकि इसका ग्राफ होता नहीं है. अभी ये ग्राफ हो गया और यहाँ पर हमने मार्क कर लिया A B C D. अब इसको हमने बोल दिया 2 थीटा कर दिया उन्होंने इसको, और इसको थीटा ही रखा. ठीक है. हर एंगल पे वो चेंज करते गए. फाइनली एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर उन्होंने इस इंक्लाइन प्लेन को थोड़ा सा बदल दिया, पूरा ही जीरो कर दिया इस इंक्लाइनेशन को. अभी ये कैसा हो गया, ये कुछ ऐसा, और ये पूरा सीधा हो गया, ये पूरा का पूरा सीधा हो गया. अगर यहां से उन्होंने बॉल को ड्रॉप किया, यहां से उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, और इट कंटिन्यूड इन द स्टेट ऑफ मोशन, और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था. फ्रिक्शन, ये जो सरफेस था, रिमेंबर दिस सरफेस वाज फ्रिक्शनलेस सरफेस. और ये सरफेस को काफी ज्यादा स्मूथ रखा था, जिसके कारण बॉल यहां से ड्रॉप हुआ
और वो सीधा चलता चला गया। और फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर उन्होंने पूरा तरीके से इसको बहुत ज्यादा स्मूथ बनाया था। ठीक है, स्मूथ बनाते हैं सरफेस को तो हमारा फ्रिक्शन कम होता है, रफ जितना बनाएंगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ता है, बिकॉज इंटरलॉकिंग रफ सरफेस में अच्छे से हो जाता है। एंड जब बॉल आगे चला गया, अब ये आगे चलता गया, फिर लोगों को पता चला नो, एरिस्टोटल वाज एक्चुअली रॉन्ग, his assumption was wrong. That is why today we call it as a fallacy. It is called today as a fallacy. It's a wrong assumption. So that is why Galileo conducted this experiment, and on the basis of this experiment, Newton actually formulated the first law, all the three laws of motion, which we are going to see one by one in the upcoming videos. Okay, so this was the major thing that Galileo taught us, that everything. So according to Galileo is what, whenever a body is undergoing in motion, an external force is not required for it to move it in motion. It will continue its state. Okay, same thing will be repeated in Newton's first law, something you will be able to relate. But Galileo was not able to just give a lot of examples. He died after that, I think. And after that, Newton came and Newton gave a lot of three laws of motion, which governs 50% of classical physics. 50% of classical physics is based on Newton's laws of motion. Okay, and in the upcoming videos, we are going to see it one by one. Okay, we'll come in the next video with the first law of motion. Okay, and till then, goodbye and take care.